वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। फोटोन यानी कि क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसकी पहले हम डिस्कवरी देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन। इन द ईयर 1905 एल्बर्ट आइंस्टाइन reinterpreted Planck's theory to further explain the photoelectric effect. Basically, Planck's work led Einstein in determining that light exists in discrete quanta of energy called photons. According to Einstein, the emission of photoelectron is the result of interaction between a single photon of the incident radiation and an electron in the metal. When the photon's energy single when the photon's energy यानी कि जब E is equal to hf is transferred to an electron in a metal, a part of its energy phi is used by the electron to break away from the metal and the rest appears as the maximum kinetic energy of electron. यानी कि यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा एनर्जी E is equal to phi plus kinetic energy. This is called Einstein photoelectric equation. Here phi is equal to hf naught is the work function. When kinetic energy of the photoelectron is 0, the frequency f is equal to threshold frequency f naught. Hence Einstein photoelectric equation becomes hf naught is equal to phi. Then kinetic energy max is equal to E minus hf naught. If E is less than phi, there will be no photoelectric effect. If E is equal to phi, the photoelectric effect occurs, but the kinetic energy of the expelled photon is 0. If energy is greater than phi, then photoelectric effect will occur and expelled electron possesses kinetic energy. There are so many practical utilizations of photoelectric effect. For example, photocells, photoconductive devices and solar cell etc. इसके बाद जो हमारा बहुत ही मेन टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है कॉम्पटन्स इफेक्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन है, डायग्राम है, डेफिनेशन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन भी है। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्थर Compton in 1923 conducting an experiment in which he made incident a beam of X-rays of wavelength lambda on a block of graphite. He found that the scattered X-rays had a slightly longer wavelength than the incident rays. The amount of energy reduction depended on the angle at which X-rays were scattered. This phenomenon is known as Compton's effect. इसकी जो डेफिनेशन है इस कॉन्सेप्ट की वो है कॉम्पटन्स इफेक्ट इज़ द फिनोमेना वेयर एक्स-रे स्कैटर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन transferring energy and momentum and increases the wavelength of scattered radiations. The change in wavelength यानी कि डेल्टा लैम्डा between a scattered X-ray and an incident X-ray is called Compton shift. In order to explain this effect, Compton assumed that if a proton behaves like particle, its collision between other particle is similar to that between two billiard balls. Hence, both energy and momentum must be conserved. If the incident photon collides with an electron initially at rest, the photon transfers some of its energy and momentum to the electron consequently. The energy and the frequency of the scattered photon are lowered and its wavelength increases. By applying conservation of energy, we have hf is equal to kinetic energy plus hf. ठीक है, here hf is represents the energy of incident and scattered photon. ठीक है, यहाँ पे p is equal to p नॉट प्लस p के ऊपर साइन दे देंगे हम, ठीक है, ताकि वो पहले वाले पी से डिफरेंट हो जाए। आगे इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, बहुत इजी है, सिंपल है, बुक में गिवन है, और डायग्राम भी है, वो भी हम बुक से कर लेंगे।
बाकी जो है गाइस आज का टॉपिक होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।